So in previous lecture we have seen what is CSS and how we declare the CSS in pages, right? There are three ways to declare a CSS. Right, so we can add CSS in HTML document in three ways. Which are that? Darsan. Darsan Sonaj. Are you there? कौन सा वे टू डिक्लेयर अ CSS in HTML document? Darsan. Okay, no problem. देवांशी. यस सर. कौन सा वे से डिक्लेयर कर सकते हैं हम CSS इन HTML डॉक्यूमेंट? इनलाइन एक्सटर्नल. हाँ, inline external and third one is inline internal and external, right? There are three ways to declare a Yes, CSS in HTML document. First one is a inline, second one is a internal, and third one is a external. Okay. Deepmala. Are you there, Deepmala? માઇક નથી તારી જોડે? ઓકે. Jay Tandel. Yes, sir. So what is the use of inline CSS? Right, there are three ways to declare a CSS: inline, internal, and external. Right. So first one is inline. कहाँ पे देते हैं और what is the use of inline CSS? Specific element or specific paragraph. Means एक particular element पे देते हैं. हाँ, inline. हाँ. So that is affected to that element only. Yeah, right? that element only. Yes. हाँ. Which attribute is used? कौन सा attribute use करते हैं? Style. हाँ. Okay. Fine. Prachi. Yes, sir. Okay, second one is the internal CSS, right? तो वो कब देते हैं internal CSS? सिंगल HTML पेज. हाँ, अगर मुझे वो सिंगल पेज पे CSS अप्लाई करना है तो मैं इंटरनल CSS का यूज करूंगा, राइट? कहाँ पे लिखते हैं वो CSS? कौन सा सेक्शन में? हेड सेक्शन में. Okay. For that, which tag we have to use inside this style tag, right? Okay, fine. Okay, third one is Sujal. Sujal, are you there? Dhwani. Pachani Dhwani. Yes, sir. थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS. वो कब अप्लाई करते हैं हम? More than one web document पे जब अप्लाई करना चाहते हो सेम स्टाइल तब. या फाइन.
ओके, अगर मोर देन वन HTML पेज पे अगर मुझे सेम CSS अप्लाई करनी है तो एट दैट टाइम आई हैव यूज एक्सटर्नल CSS. ओके, तो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ता है, एक सेपरेट फाइल क्रिएट करनी पड़ती है CSS के लिए. उसका एक्सटेंशन क्या रहता है वो फाइल का .css, राइट. और विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग, राइट. लिंक टैग में रेफरेंस इज इक्वल टू स्टाइल सेट की जो नेम है वो, राइट. तो वो अगर वो पेज पे हम वो लाइन लिख देंगे तो दैट CSS विल बी अप्लाइड टू दैट पेज, राइट. सो यहाँ तक हमने लिखा था, राइट. सो नेक्स्ट, okay. So there are three ways to declare a CSS: inline, internal, and external. Right. So what is now today we have seen how we are declare a CSS. Right. For font में कैसे देते हैं, which are the attributes, right? Height कैसे देते हैं, that we have seen today. Right. One by one के tag पे कैसे देखते हैं, कौन सा selector use होता है, right? That we have seen today's session. Right. So first of all, what is CSS? CSS is stands for Cascading Style Sheet. Right. So everyone visible to my screen? My screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So see this, what is CSS, right? That we have seen already in previous lecture, but I have revised. CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS describes how HTML elements are to be displayed on the screen. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. External sites are stored in CSS file, right? That we have covered in previous lecture, right? All those things, right? Now, today we have see what is the syntax to declare a CSS, right? For that, there are 3 or 4 ways. सो फर्स्ट ये जो पार्ट है, राइट, आप स्टाइल टिक लिखते हैं उसके अंदर यू हैव राइट टैग और यू कैन से सिलेक्टर. देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ सिलेक्टर, वो हम देखते हैं, राइट. सो ये जो पार्ट है उसको सिलेक्टर बोलते हैं. H1 जो लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टर, राइट. और ये जो इनसाइड दी कर्ली ब्रैकेट है, दैट इज नथिंग बट योर डिक्लेरेशन. दैट इज नथिंग बट योर declaration. So this one is called selector, and inside the curly bracket here, that is nothing but your declaration. Okay, so first part here, see this color. So color is nothing but the property, or you can say attribute. Colon करके जो वैल्यू देते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, दैट इज कॉलन करके उसकी वैल्यू. अगर मुझे और कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है तो आफ्टर द सेमीकोलन आई हैव पुट सेमीकोलन एंड देन राइट अगेन द प्रॉपर्टी कॉलन इट्स वैल्यू. अगर मुझे कोई और चाहिए तो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, लाइक दैट वी हैव टू define CSS. So this one is a syntax to declare a CSS, right? So first part is selector, inside the curly bracket, this one is the declaration, then properties colon its value, semicolon property colon its value, like that, right? वो हमें जितने चाहिए that we have to declare. So this one is called selector, right? Selector different type के होते हैं, that we have see in next topic, right? So the selector point to the HTML element you want to style, right? So selector क्या कहता है कि कहाँ पे मुझे स्टाइल अप्लाई करनी है, in which part I have to apply this CSS. So that is nothing but selector, right? कहाँ पे मुझे अप्लाई करनी है. ये जो डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेंट वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, semicolon, right? So what declaration include CSS properties and its value, right? So what declaration include its properties and its value, right? And separated by property and its value is separated by colon, right? Two attributes are separated by semicolon, and attributes and its value are separated by colon, right? So that is the syntax to declare a CSS. That is the syntax, right? Selector क्या है, कहाँ पे मुझे अप्लाई करनी है CSS, that is nothing but your selector.
And after that, in curly bracket, that is nothing but your declaration. Declaration में क्या आता है? Property and its value. Property colon value. अगर और कोई property add करते हैं तो again we have to put semicolon property colon value like that, right? So that is the syntax of to declare a CSS. Understood up to here, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. See this example. I have applied the style sheet on paragraph. So P is nothing but your tag. That is called selector. P is nothing but your selector. ये जो part है, that is nothing but declaration, right? A property colon its value. Properties colon its value, right? After that, हम ये जो part है वो finish हो जाएगा. After that, we have see the example. So you understood better. Right. So selector curly bracket property colon its value, right? Text align, ये सब आपको याद रखना है. ये जो कौन सी प्रॉपर्टी है, that you have to remember, right? कैसे डिक्लेयर करना है, right? कलर है तो कलर कहाँ पे अप्लाई करते हैं? तो फॉन्ट के लिए कलर अप्लाई करते हैं. टेक्स्ट अलाइन मींस टेक्स्ट की जो अलाइन है उसको लिए. So that you have to remember, right? जितनी भी प्रॉपर्टी है, that you have to study well. Okay. Now, so understood. Now we have seen CSS selectors. कौन से selectors होते हैं? That we have to see, right? ये जो है वो आपका tag selector, right? Particular tag पे हमें लेना है तो that is called tag selector, right? The CSS selector are used to find the HTML element you want to style, right? Selector क्या करता है? कहाँ पे मुझे अप्लाई करनी है स्टाइल, that it is fine, right? वो उसको वहां से पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे ये CSS अप्लाई करनी है. that is nothing but your CSS, right? So we have see one by one. Simple selector, that is nothing but your name, tag का name. You can apply on ID, you can apply on class. That is nothing but selector. Contributor selector, that is select element based on a specific relation between them. Right? वो हम देखते हैं one by one कि what is selector, right? So first one ID selector, right? Suppose हर एक अगर text box होगा तो we can give the ID. राइट अगर आपका जो HTML हो गया होगा तो आपको पता चलेगा कि हम उसको आईडी स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? सो पर्टिकुलर आईडी पे भी हम CSS अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो आईडी होगा तो उस पे हमें ये CSS अप्लाई करनी है, राइट? द आईडी सिलेक्टर यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट, राइट? अगर मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई करना है तो एट अ टाइम आई हैव टू यूज द आईडी सिलेक्टर, राइट? सो फर्स्ट वन इज द CSS आईडी सिलेक्टर, राइट? द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज, राइट? जो भी आईडी होगा दैट इज यूनिक, राइट? वी कैन नॉट यूज सेम आईडी टू डिफरेंट एलिमेंट, राइट? सो आईडी इज यूनिक and once we apply on ID, that CSS is applied to particular ID only, right? Okay, how we are apply the CSS to ID for the syntax is you have to use has. You have to use has an ID name. Has an ID name. See this example. Has paragraph 1, para 1. जो भी ID देंगे has an ID name. तो अगर हम ID यूज कर रहे हैं तो कंपलसरी हमें क्या लिखना पड़ेगा? बिफोर द नेम ऑफ द ID has लिखना पड़ेगा. To select an element with a specific ID, we have to write the has character, followed by the ID of the element, followed by the ID of the element, right? So understood? ID यूज करना है हमें तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? आप ये एक बार देख लो कि हाउ वी आर अप्लाई. आईडी हमें यूज करना है तो उसके लिए हैज करके लिखना पड़ेगा, राइट? क्लास पे अप्लाई करना है तो किस तरह से लिखना पड़े वो सब हम देखते हैं. आफ्टर दैट वी हैव सी द एग्जांपल. पता चल रहा है सबको?
सो आईडी पे अप्लाई करना है तो वी हैव टू हैज एन आईडी नेम कर्ली ब्रैकेट एंड पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, राइट। ये जो एट्रीब्यूट है वो भी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे फास्टली कि ये है फॉन्ट पे कैसे देना है, साइज कैसे देना है, इमेज पे कैसे देना है, बैकग्राउंड कैसे देना है, टेक्स्ट पे कैसे देना है, बटन पे कैसे देना है, दैट वी हैव सी वन बाय वन विद द एग्जांपल, राइट। सो आईडी पे अप्लाई करना है तो वी हैव टू यूज हैज एन आईडी नेम कर्ली ब्रैकेट एंड whatever the attribute and its value. Like that, we have to apply the CSS on ID, right? So understood, everyone? So we have see the selector. Is the first one is the ID selector. How we are applying? Has an ID name. Has an ID name. Curly bracket. Property colon its value. Property colon and its value. Like that, we have to apply the CSS. Clear? Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોયો ને એની અંદર શું હતું, આપણે ટેગ કરીને લખતા હતા. એ ટેગનું નેમ હતું H1 P બોડી, રાઈટ. સિમિલરલી જો મારે આઈડી પર એપ્લાય કરવું હોય તો આઈ હેવ ટુ યુઝ ધી હેઝ એન આઈડી નેમ. હેઝ એન આઈડી નેમ, રાઈટ. Now, next is class selector. Next is CSS class selector. The class selector selects HTML element with a specific class attribute. The class selector selects HTML element with a specific class attribute. To select elements with a specific class, write up dot character. Right? अगर हम class पे apply करते हैं तो how we have to use dot operator, right? Dot and class name. For example, ये जो है suppose this one is tag H1, right? So how I have to give class name. Class name suppose XYZ, right? Suppose मैं पैराग्राफ लेता हूँ तो वहां पे लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू टेस्ट, राइट. जिसका क्लास टेस्ट होगा उसमें ये CSS अप्लाई हो जाएगी. हाउ वी आर अप्लाइंग क्लास डॉट टेस्ट. ये हमें कहाँ पे लिखना है, स्टाइल टैग पे. आई जस्ट गिव द एग्जांपल कलर कॉलन रेड, राइट, लाइक दैट. तो जो भी क्लास टेस्ट होगा वहां पे ये जो CSS होगी वो अप्लाई होगी. पता चला सबको. आईडी होगा तो हमें क्या करना है, आईडी के लिए सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूं आईडी इज इक्वल टू XYZ फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे अगर मुझे अप्लाई करना है CSS तो आईडी पे अप्लाई करना है तो मुझे हैज लिखना पड़ेगा. हैज एन आईडी नेम, राइट. कॉलम पता चला सबको. सिलेक्टर आईडी पे अप्लाई करना है तो व्हाट इज द सिंटैक्स, डॉट एंड आईडी नेम. And if you want to apply the class, then has and class name, has and class name, like that. Understood, everyone? पता चला सबको? Yes, sir. ખબર પડે છે ને કે ઉપરથી જાય છે. ટ્રાય કરજો, એક CSS ફાઇલ બનાવો, એને લિંક કરો અને આવી રીતે અપ્લાય કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે, બરાબર ને. એક એક્ઝામ્પલ કરશો ને એટલે ખ્યાલ આવી જશે તમને લોકોને. So ID and class, right. You can also specify that only specific HTML elements should be affected by a class. अगर मुझे ऐसा लिखना है कि सपोज मुझे क्लास है टेस्ट, राइट, लेकिन मुझे वो पैराग्राफ पे ही लेना है, H1 पे नहीं लेना है. तो मैं क्या लिखूंगा, P डॉट क्लास नेम, P डॉट क्लास नेम,
तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, राइट? पता चला सबको? पी टैग होना चाहिए और क्लास नेम टेस्ट होना चाहिए। तो वहां पे अगर मुझे स्पेसिफिक देना है तो इस तरह से आई हैव गिव पी डॉट क्लास नेम करके। अंडरस्टूड एवरीवन? तो दैट ये जो है दैट इज नॉट अफेक्ट टू H1, इट इज ओनली अफेक्ट टू दिस एलिमेंट P, राइट? अगर मैं सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ तो दैट विल बी अप्लाई टू बोथ द टैग, जिसका क्लास टेस्ट होगा वहां पे वो अप्लाई होगा। लेकिन आई हैव इफ आई हैव राइट p डॉट टेस्ट देन इट इज अप्लाई टू दिस पैराग्राफ टैग ओनली, राइट? पता चला सबको? खबर पड़े छे? रिंकल पटेल, आर यू देयर? खबर पड़े छे रिंकल? हाँ सर। સો આઈડી પર મારે સીએસએસ એપ્લાય કરવું હોય રિંકલ તો શું લખવું પડે? શું લખવું પડે રિંકલ? આપણે જોયું ને એક્ઝામ્પલ, શું લખવું પડે આઈડી પર હોય તો? જો અહીંયા જો હેઝ અને આઈડી નેમ XYZ, બરાબર? આઈડી પર એપ્લાય કરવું હોય તો હેઝ એન્ડ આઈડી નેમ, ખ્યાલ આવે છે? हाँ सर। સ્મિત ચાપાનેરી, Yes, sir. ક્લાસ પર એપ્લાય કરવું હોય તો કેવી રીતે કરાશે? P ને dot લગાવીને. પી ખાલી ક્લાસ પર લગાવવું હોય ને તો ડોટ અને ક્લાસ નેમ, પણ પર્ટિક્યુલર પેરેગ્રાફ પર જે લગાવવું હોય તો પી ડોટ ક્લાસ નેમ. એવું નથી પી નથી, એ તો પી ધ ટ્રેક છે. સપોઝ આ ક્લાસ જો આનો ક્લાસ નેમ શું છે? સી ક્લાસ નેમ ટેસ્ટ છે, આનો બી ક્લાસ નેમ ટેસ્ટ છે. એટલે જો મારે પર્ટિક્યુલર ક્લાસ પર આપવું હોય તો ડોટ ટેસ્ટ લખીશ. પણ મારે એવું જોઈતું છે કે મારે H1 પર જ એપ્લાય થવું જોઈએ, H1 અને આ ક્લાસ નેમ હોવું જોઈએ, તો હું શું લખીશ? H1 ડોટ ક્લાસ નેમ. એટલે ક્લાસ હોય તો ડોટ અને આઈડી હોય તો હેઝ. ખબર પડી? ક્લાસ હોય તો ડોટ, Yes, sir. આઈડી હોય તો હેઝ. Yes, sir. So clear up to here everyone? यस। Okay. Again, we can HTML elements can also refer to more than one class, right? એટલે મારે એક કરતા વધારે ક્લાસ આપવો હોય તો હું આવી રીતે બી લખી શકું છું, સેન્ટર સ્પેસ લાર્જ. એટલે ક્લાસ નેમ સેન્ટર બી કહેવાશે એન્ડ અગેન લાર્જ બી आप बोल सकते हो. पता चला? अगर इफ आई हैव टू गिव दी more than one class name, right? So how I write? Class is equal to center space large. तो ये जो पैराग्राफ का टैग है उसका क्लास सेंटर भी यू कैन से एंड यू कैन से लार्ज ऑल्सो, राइट? बोथ क्लास नेम इज फॉर दिस टैग, राइट? अगर मुझे एक से ज्यादा तो स्पेस करके करना पड़ेगा. पता चल रहा है सबको? तो सेंटर पे होगा वो भी अप्लाई होगा और लार्ज अगर लिखेंगे तो दैट इज ऑल्सो अप्लाई, राइट? सी यहाँ पे p डॉट सेंटर लिखा है तो दैट इज पैराग्राफ एंड क्लास नेम इज सेंटर, लाइक दिस. अगेन मैं ऐसा लिखूंगा p डॉट लार्ज तो दैट इज ऑल्सो द सेम. इसका क्लास नेम सेंटर भी है एंड इट्स ऑल्सो लार्ज. पता चल रहा है? तो इस तरह से मैं एक टैग को मोर देन वन क्लास नेम दे सकता हूं, राइट? See this example. Now
Third one is a CSS universal selector, right? मुझे अब क्या करना है, सबको देना है. तो I have to use star, right? That is applied to all. अगर मैं star लिखूंगा तो CSS rule below will affect every HTML element. मुझे every HTML element पे लिखना है तो what I have to use star operator, right? Star करके तो वो सभी एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी, right? Next is the CSS grouping selector. पता चला ID, class and universal selector. ID, class and universal selector. Next is a CSS grouping selector. The grouping selector select all the HTML element with the same style definition. H1 जहां पे भी होगा उस पे ए स्टाइल अप्लाई होगी, H2 जहां पे भी होगा उसको ए स्टाइल अप्लाई होगी. तो दैट इज नथिंग बट ग्रुपिंग सिलेक्टर. वो अभी तक जो हम करते आए हैं दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग सिलेक्टर. दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग सिलेक्टर, राइट? So in this example, we have grouped the selector from the code above. H1, H2, P, comma करके लिखेंगे तो ये जो जितने भी एलिमेंट है उस पे ए टैग अप्लाई हो जाएगा, राइट? यहाँ पे जो जो टैग लिखेंगे तो ये जो CSS अप्लाई किया है हमने दैट इज अप्लाई टू दिस टैग, ऑल टैग. कॉमा जितने भी एलिमेंट पे करना है तो कॉमा कॉमा करके हम लिख सकते हैं, राइट? पहले आप हम क्या करें, अभी सिंटैक्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. बाद में हमें वी हैव टू क्रिएट वन CSS फाइल एंड दैट CSS फाइल वी हैव टू अप्लाई ऑन HTML पेज. ये करना है हमें, पता चल रहा है सबको? तो फर्स्ट वी हैव सी द सिंटैक्स कि हाउ वी आर अप्लाई द CSS ऑन पेज, राइट? तो उसके लिए कौन से वे है दैट वी हैव सी टुडे, राइट? ये जो सेशन है उसमें हम देख रहे हैं सिंटैक्स के कैसे कैसे हम CSS अप्लाई कर सकते हैं. विच आर द सिलेक्टर्स, राइट? मोर देन वन एलिमेंट पे देना है तो किस तरह से करना है, आईडी पे देना है तो किस तरह से करना है, क्लास पे देना है तो किस तरह से करना है, पता चल रहा है? तो वो हम आज के सेशन में देख रहे हैं, राइट? तो दिस ऑल CSS सिंपल सिलेक्टर, राइट? सो ये जो है वो हैश करके आईडी है, राइट? सिलेक्ट एलिमेंट विथ आईडी फर्स्ट नेम. एग्जांपल फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम जिसका आईडी होगा वहां पे होगा. डॉट क्लास नेम, सो डॉट इंट्रो क्लास जिसका होगा उस पे ये अप्लाई होगा, राइट? एलिमेंट डॉट क्लास, एलिमेंट डॉट क्लास, एलिमेंट का नेम डॉट क्लास नेम, ये जिसका होगा उस पे ये जो CSS है दैट विल बी अप्लाइड. स्टाइल स्टार है इट विल बी अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स. अगर स्टार ऑपरेटर यूज किया होगा तो दैट विल बी अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट, राइट? P है, पर्टिकुलर एलिमेंट पे देना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के नेम, राइट? मोर देन वन एलिमेंट को सेम में अप्लाई करना है तो कॉमा करके लिखना पड़ेगा. P, H1, div, जो भी XYZ, राइट? तो कॉमा कॉमा करके जितने भी एलिमेंट हो गए उसमें इस सेम CSS विल बी अप्लाइड. क्लियर एवरीवन? सो दैट इज नथिंग बट सिलेक्टर्स. पता चला सबको? सो one minute.
ओके हाँ 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 बात करी हाँ હા એમને તારે મેલ કરવો પડશે અને રીઝન જે આપણું જે છે તે મેન્શન કરે છે કે આ સિલેક્ટેડ ઇઝ વિપ્રો ओके सो यहाँ पे हमें देना है CSS. This one is internal CSS, right? હા વાત કરી લે કઈ વાંધો નહીં એટલે કે હું ઓફિશિયલી મેલ કરી Suppose ફોન આવે તો વાત કરી દઉં H1 पे हम નહીં હું કઈ देखेंगे. નહીં કહેશો Suppose color એમએનસી કંપનીમાં આપણને મળે color છે વિપ્રો એટલે કઈ કહેશો red. એમને કહેવાનું કે મને અત્યારે જ કન્ફર્મેશન મળ્યું છે એટલે જેવું કન્ફર્મેશન મળ્યું એટલે હું તમને અત્યારે ઇન્ફોર્મ કરું છું Green, suppose. Right. એમે નથી જોયું કે ડિસ્કસ જોડે ડિસ્કસ કરી લેજો એકવાર क्लास पे कैसे रहते हैं डॉट ऑपरेटर से. Okay, so this one, this will be applied on elements, right? So this one is, जिसका name class name demo होगा, right? So class name demo is of H2 tag, right? Suppose welcome to class, right? Welcome to ID. Right, I run this. Right, see, welcome to GDEC. That is red. Right. Right, so H1 में लिखा है welcome to GDEC. Right, H1 is the element पे apply किया है. So how we are applying? Element name, curly bracket, and attribute colon its value. Right, so red. Next is paragraph. Right, so यहाँ पे नेम अलग होगा.
ब्लू लिख देता हूँ अभी टेम्पोररी, तो ये ब्लू हो जाएगी, राइट राइट। हैज XYZ, राइट। ये जो हैज इज नथिंग बट आईडी, राइट। आई वेलकम टू आईडी लिखा है तो दैट कलर इज ब्लू, राइट। एंड डॉट डेमो कलर इज येलो, राइट। डॉट इज अ डेमो इज अ क्लास नेम, तो दिस वे वी कैन अप्लाई, राइट। अभी जिसका भी क्लास डेमो रखेंगे तो इट विल बी अप्लाई, राइट। सपोज इसका क्लास रखते हैं डेमो, तो this become yellow, this become yellow, right? So understood everyone? पता चला सबको? ખબર પડે છે? Yes, sir. Yes, sir. સ્મિત Yes, sir. ખબર પડી? रिदम Yes, sir. પડી ગઈ બધાને ખબર? પિંકલ? Yes, sir. ओके, तो नाउ हमें क्या करना है, फर्स्ट लॉगिन पेज बनाना है, राइट। तो लॉगिन पेज में लॉगिन जो टेबल है, राइट, तो दैट शुड बी इन सेंटर, और उसका बैकग्राउंड कलर एक चूज करके आपको वो CSS अप्लाई करके करना है, राइट। सो एवरीवन ट्राई दिस लॉगिन पेज, राइट। ये इस तरह से आप अभी सिंगल पेज पे करो, आफ्टर दैट CSS फाइल का यूज करके करो, ये ट्राई करो। अभी देयर इज 10 मिनट लेफ्ट, right? So everyone try this, right? So now everyone write the enrollment number in chat box, and after that you can leave.